जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की आज्ञा से आगे बढ़ते हुए पहले कल का थोड़ा सा देख लें। कल हमने क्या पढ़ा था। कल थोड़ा सा फास्ट रीडिंग भी करवाई थी गुरु जी ने। गुरु जी कहते दवा दो पढ़, दवा दो पढ़। क्योंकि कई ऐसी चीजें होती हैं वो हम some things are not really really comprehensible, और बट जैसे पढ़नी होती है। क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि गुरुजी ने तो हमारा रास्ता बहुत डिफरेंट किया हुआ। इट्स रियली इजी, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स नॉट अबाउट चक्रास, इट्स नॉट अबाउट कुंडलिनी, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स बट प्योर लव, हिज प्योर ब्लिस, यू नो, हिज which is ever showering on everyone. और बेसिकली मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो भी हम लोगों की लाइफ में कुछ होता है, हम तो गुरु जी की तपस्या का फल खा रहे हैं। इट्स नथिंग दैट वी हैव डन, यू नो, रियली 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 समथिंग, यू नो, कि जब हमने कोई बहुत ऐसा कोई भक्ति की है कि जिसका हमें फल मिल रहा है। इतना कहते हैं ना, गुरु जी दी कमाई दा खा रहे हैं। And thank you, Guruji, for making our way in that way. You know, you have made our way really, really easy, that we don't have to go through, you know, some complicated procedures. और फिर इस करके मैं बताना मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। कई चीजें हमें हमें फास्ट पढ़नी पड़ेंगी, यू नो, क्योंकि सारी चीजें इट्स नॉट पॉसिबल टू अब्सॉर्ब। तो जिस तरह से गुरुजी करवा रहे हैं। सो अगर हम कल का देखें तो कल हमें महात्मा गांधी जी के बारे में श्री स्वामी रामा जी ने बताया था। एंड वी ऑल नो कि महात्मा गांधी जी प्रैक्टिस्ड, यू नो, उन्होंने हमें कहा था कि जो अहिंसा है उस पाथ पे चलना चाहिए। और महात्मा गांधी जी की लाइफ ऐसी रही है, यू नो, लिव्ड फॉर अदर्स, ही बिलीव्ड इन सर्विंग अदर्स। और उसके बाद उनका वो जिस तरह से भी उन्होंने अपनी लाइफ जी, उनकी लाइफ का बहुत बहुत इंप्रेशन रहा है स्वामी रामा जी पे। और महात्मा गांधी जी ने कहा कि हेट्रेड इज नॉट ओवरकम बाय हेट्रेड बट रादर बाय लव। सो नफरत को खत्म करने के लिए जरूरी नहीं है नफरत ही करनी चाहिए, पर उसको प्यार से जीता जा सकता है। और गांधी जी also believed in, you know, art of living without concerns for the fruits of one's actions, but अपने कर्म अच्छी तरह से करो, उसके फल की इच्छा को सोचे बगैर। उसके बाद हमने रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ा था। हमें पता है कि शांति निकेतन, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड फैसिनेटिंग आश्रम्स ऑफ द वर्ल्ड। और वहां पर भी स्वामी रामा जी को जाने को मिला। और स्वामी रामा जी ने बोला कि टैगोर जी की भी थिंकिंग बहुत हाई। उन्होंने कहा ही बिलीव्ड इन लिविंग इन द वर्ल्ड विदाउट बीइंग ऑफ इट। जिसको ये जीना आ गया वो जीते जी ही, जैसे कहते हैं ना, तपस्वी बन जाता है, कि दुनिया में रह के दुनिया से ऊपर उठ के आप जीना सीखें। उसमें आप अपने आप से आप डिटैच हो जाते हैं चीजों से। जब आप अपना एक्शन भी करते हैं, यू डोंट डू इट बिकॉज यू वांट रिवॉर्ड ऑफ दैट एक्शन, यू डू इट बिकॉज यू गॉट टू डू इट सेल्फलेसली। तो वो आप अपना कर्म बहुत उस तरह से निभाते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर जी भी बहुत कम सोते थे। और he would not even recline in the daytime, no siesta, no afternoon nap, no 40 winks, nothing of that sort. He would keep himself busy. और हमें जैसे पता है रविंद्रनाथ टैगोर जी बंगाल से, और उन्होंने इतनी प्यारी प्यारी डिवाइन पोम्स लिखी हैं, वो रीडर को बहुत 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 इंचैंट करती हैं। इफ यू रीड इट, यू कैन फील द डेप्थ ऑफ हिज थिंकिंग एंड डेप्थ ऑफ हिज सोल। इस तरह से उन्होंने बहुत 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 पोम्स लिखी हैं। और उसके बाद देन वी केम टू नो अबाउट द हिस्ट्री, जो थोड़ा सा हमने फास्ट पढ़ा था। बिकॉज एज वी नो, जो ब्रिटिशर्स थे वो किस इंटेंशन से आए थे, डिवाइड एंड रूल करने आए थे। और जो हमारे बहुत बहुत महान फ्रीडम फाइटर्स भी हुए हैं, पेट्रियाटिक्स भी हुए हैं, उन्होंने कैसे अपनी जान को भी दांव पे लगा दिया। फिर हमने ये पढ़ा था कल, जो मैं स्वामी रामा जी ने पढ़ाया था पंजाबी महाराज के बारे में। जब वो शिमला गए थे तो वहां पर उन्होंने बोला कि एक्चुअली जो पंजाबी महाराज थे वो जो स्वामी भी बने थे आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बने थे स्वामी जी। और
वो उस तरह से वैसे बनना नहीं चाहते थे, पर उनको ये था कि वैसे वो बहुत काइंड थे, जेंटल थे, बट वो रिबेलियस भी हो जाते थे क्योंकि उनको ब्रिटिशर्स का ये जो रूल था और जो उनके नॉर्म्स थे वो उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद थे। एंड ही वुड नॉट थिंक ट्वाइस टू insult Britishers. He would just speak blatantly whatever he had in his mind. और उस तरह से फिर हमने ये भी पढ़ा कि जो फैनेटिक डिवोशन होती है कंट्री की वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज जो मैनकाइंड के लिए, पूरी मैनकाइंड के लिए जो डिवोशन होती है, दैट इज व्हाट मैटर्स। और स्वामी जी रामा जी के मास्टर ने तो इंडिपेंडेंस की डेट भी पहले से बता दी थी। और ये जो स्वामी थे शिमला वाले, वो बहुत अपोज करते थे मिशनरीज के, बिकॉज वो भी बहुत फैनेटिक से थे। और इस तरह से फिर हमने पढ़ा। और देन वी रेड अबाउट महर्षि रमन जी। महर्षि रमन जी में इतनी शक्ति, इतनी दिव्य शक्ति थी। स्वामी रामा जी कहते कि अगर उनके पास हम बैठ जाए ना, we could get all the answers without even questioning him. That was his aura, it was so divine. और ऐसा लगता था कि बंदा सविकल्प समाधि में पहुंच गया है, बिकॉज ऐसा ही होता है अगर ऐसे यू फील लाइक दैट इन द प्रेजेंस ऑफ सच ग्रेट मैन। और कहते हैं a glance of such great man just purifies the way of the soul। इस तरह के इतने दिव्य शक्ति वाले आदमी के अगर आप नजदीक बैठे तो ऐसा लगता है आपकी आत्मा बहुत प्योर हो गई है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था श्री औरोबिंदो जी के बारे में कि किस तरह से स्वामी जी को मौका मिला था वहां पर भी रहने का। और उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि ये जो द होल यूनिवर्स है ना, ये है क्या? इट्स एन एक्सप्रेशन और प्ले ऑफ डिवाइन। ये तो एक खेल है। और मैन्स हाईएस्ट डेस्टिनी उसकी क्या है? इज टू बी फुली अवेयर ऑफ द यूनिवर्सल स्पिरिट। अपने आप को उसमें, उस कॉन्शियसनेस में जगा देना, वही है। और उसके बाद फिर आज हम आगे पढ़ेंगे, दिस इज द वेव ऑफ ब्लिस। ओके, स्वामी जी कहते हैं, I once visited Chitrakoot, one of the holy places where, according to the epic Ramayana, Lord Rama lived during his exile. स्वामी जी कहते हैं मुझे चित्रकूट जाने का मौका मिला। It's one of the holy places because वहां पर एपिक रामायणा के अनुसार लॉर्ड रामा जी वनवास के दौरान वहां रहे थे। कहते दिस प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द विंध्या रेंज, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू एशियन ट्रेडिशन, वैरागी साधुस विजिट वृंदावन एंड चित्रकूट। कहते हैं वृंदावन कौन जाते हैं? दोज हू लव कृष्णा। एंड चित्रकूट कौन जाते हैं? जो रामा जी को प्यार करते हैं। कहते in another part of the Vindhya range, in a holy place called Vindhyachal, there lived many Shakti worshippers। कहते जो विंध्या रेंज है ना, उधर एक और जो जगह है विंध्याचल, वहां पर जो शक्ति को मानते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं, वो वहां रहते हैं। कहते traveling toward the forest of River State, I went to the Sathana forest and there met a Swami who was very handsome and highly educated in the Vedantic and Yoga tradition। स्वामी जी की मुलाकात एक बहुत हैंडसम स्वामी से होती है जो बहुत ही पहुंचे हुए थे वेदास में, योगा ट्रेडिशन में। He knew the scriptures and was a very brilliant sadhak. He was later nominated as Shankaracharya of Jyotirmayapitham, which is in the Himalayas on the way to Badrinath. His name was, तो स्वामी जी का नाम क्या था? ब्रह्मानंद सरस्वती। कहते he used to live only on germinated gram seeds mixed with a little bit of salt, वो जो अंकुरित दाल होती है वो उस पे ही अपना निर्वाह करते थे। He lived on a hillock in a small natural cave near a mountain pool. I was led by the villagers to that place, but I did not find anyone there and became disappointed. The next day I went again. I found, तो वो जैसे उनको मिलना चाहते थे ना, वो उस टाइम उनको मिले नहीं, तो स्वामी जी निराश हो गए। कहते जब मैं अगले दिन गया and I found a few footprints on the edge of the pool made by the wooden sandals। तो उनको उनके ये जो पादुका होती है, wooden sandals, उसके निशान उनको पूल के एज पे मिले। I tried, but I could not track the footprints. Finally, on the 5th day of effort, early in the morning before sunrise, I went back to the pool and found him taking a bath. So Swamiji was quite fortunate, तो उनको वो मिल ही गए उस टाइम।
वो अपना जल स्नान कर रहे थे. I greeted him saying, Namo Narayan, which is commonly used salutation among Swamis, meaning I bow to the divinity in you. तो स्वामी जी में चेंज आ गया. स्वामी जी इनको बड़े प्यार से नमो नारायण करके मिले. तो कहते I bow to the divinity in you. जो डिवाइन शक्ति हर एक में ड्वेल कर रही है, मैं उसके सामने अपना सर झुकाता हूँ. He was observing silence, so he motioned for me to follow him to a small cave. I did so gladly. This was the 8th day of his silence. तो उनके मौन व्रत का वो जो समय चल रहा था, 8वां दिन था. And after staying the night with him, he broke his silence and I gently spoke to him about the purpose of my visit. Swami ji ne apna purpose bataya unko apni visit ka. I wanted to know how he was living in the ways and methods of his spiritual practices. During a conversation, he started talking to me about Sri Vidya, the highest of paths. हमने पहले भी पढ़ा कि बहुत तरह के जो पाथ हैं, अपना राज योग है, फिर वो कर्म योग है, फिर उसमें से जो श्री विद्या है वो सबसे ऊपर है. कहते followed only by accomplished Sanskrit scholars of India. इसको बहुत कम लोग इस विद्या पे निपुण हैं. It is a path which joins Raja Yoga, Kundalini Yoga, Bhakti Yoga, and Advaita Vedanta. There are 2 books recommended by the teachers of this path, The Wave of Bliss and The Wave of Beauty. The compilation of the 2 books is called Sundar Lahari in Sanskrit. तो इन सब का ये स्वामी रामा जी ने, जब मैंने बहुत पहले भी पढ़ा था कि स्वामी रामा जी ने इनको सबको बहुत अच्छी तरह से ग्रहण किया हुआ है. कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो किताबें हैं, The Wave of Bliss and The Wave of Beauty, आई थिंक इन सब में श्लोकास हैं, और इन दोनों किताबों को सुंदर लहरी कहते हैं संस्कृत में. कहते हैं there is another part of this literature called Prayoga Shastra, which is in manuscript form and found only in the Mysore and Baroda libraries. No scholar can understand the spiritual yoga poems with the help of a competent teacher who himself practices these teachings. So ये किताबें ऐसी हैं, ऐसी दिव्य किताबें हैं, कहते आप अपने आप से नहीं समझ सकते हैं. आपको बहुत एक निपुण, adept and proficient teacher you need who can really explain you. You can't imbibe the things written in these divine books on your own. Later on I found that Sri Vidya and Madhu Vidya are spiritual practices to a very few. Only 10 to 12 people in all of India. कहते मुझे बाद में पता चला ये जो श्री विद्या और मधु विद्या ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है ना, ये तो बहुत कम, सिर्फ 10 से 12 लोग ही होंगे आप देखो पूरे भारत में जिनको ये आता होगा. तो स्वामी जी has always been very excited to learn things, तो उन्होंने बोला मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया इस साइंस में, और जो भी मैं आज हूँ ना, जो भी थोड़ा बहुत मैं आज हूँ, जो भी स्वामी जी ने बहुत हम्बल तरीके से कहा बोलते I'm because of it. In this science the body is seen as a temple and the inner dweller Atman as God. तो शरीर एक आपका मंदिर है, जो उसमें अंदर विराज करते हैं वो ईश्वर हैं. A human being is like a miniature universe, and by understanding this one can understand the whole of universe and ultimately realize the absolute one. ये तो सही बात है. कहते हमारे अंदर ही पूरा एक यूनिवर्स है, जो ये लोग बहुत डीप मेडिटेशन में पहुंच जाते हैं, they can see the whole universe inside them. Finally, after studying many scriptures and learning various paths, my master helped me in choosing to practice the way of Sri Vidya. तो स्वामी रामा जी के मास्टर ने भी उनको मदद की, ये श्री विद्या की प्रैक्टिस में. In this path, the Kundalini fire is seen as the mother divine, and through yoga practices, it is awakened from its primal state and raised to the highest of the chakras. तो कहते हैं ये जो कुंडलिनी फायर है ना, जिनको मदर डिवाइन कहते हैं, जब योगा की ऐसी प्रैक्टिस हो जाती है, ये जब जागृत हो जाती है ना, तो पूरे हाईएस्ट ऑफ द चक्रास में पहुंच जाती है. कहते हैं द चक्रास आर व्हील्स ऑफ लाइफ व्हिच फॉर्म अ स्पिरिचुअल बॉडी एंड कनेक्ट द एंटायर फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस. The science of chakra is very terse, but if one knows this science well, it serves him on all levels. तो साइंस, ये जो चक्रा की साइंस है ना, कहते अगर ये किसी को पता लग जाए ना, तो हर लेवल पे हेल्प करती है. कहते the chakras operate on the physical, physiological, energetic, mental, and spiritual levels. These energy centers correspond in the physical body to points along the spinal cord. The lowest is located at the coccyx, sorry. Yeah, I just pronounced it wrong. The lowest is located at the
coccyx, the second in the sacral area, the third at the navel, the fourth at the heart, and fifth at the base of the throat, the sixth at the point between the eyebrows, and the seventh at the crown of the head. ये हमने बहुत बारी देखा जब लोग मेडिटेशन करते हैं ना, जब वो समझाते भी हैं भी चक्रास कौन सा चक्रा कहाँ पर होता है, कहाँ पर स्थित है, तो इस तरह से ये बता रहे हैं. कहते हैं the lowest chakras are the grooves toward which the lower mind rushes. ये मुझे याद है एक बारी हम बाहर थे डिफेंस कॉलोनी में, आई थिंक मेरे मदर भी थे साथ में, तो गुरुजी कहते तेरी मम्मी दी शक्ल ना मेरी मम्मी ना मिलती है, चल अंदर चल. तो गुरुजी ने ऐसे जो नेवल का पॉइंट होता है, गुरुजी कहते देखो साडा पार्ट इत्थों शुरू हुंदा हैगा. तो गुरुजी जब मौज में होते थे ना, बच्चों की तरह सब बोल देते थे, और जिस तरह से दिव्य पॉइंट्स होते हैं, गुरुजी ने उसकी फ्रेग्रेंस भी करवाई. तो इस तरह से गुरुजी की जब मौज आती थी ना, तो फिर गुरुजी उस तरह से बुला लेते थे. ओके, फिर ये है the lowest chakras are the grooves toward which the lower mind rushes. The heart, Anhat chakra, separates the upper hemisphere from the lower hemisphere and is accepted at the center of divine tranquility. Buddhism, Hinduism, Christianity, and Judaism are recognized the center, that which is called Anhat chakra in Hinduism is called the star of. Okay, Anhat chakra in Hinduism is called the Star of David in Judaism and the Sacred Heart in Christianity. तो नाम अलग अलग हैं जिसको चक्रा को किस तरह से अपने रिलीजन्स के मुताबिक बोला जाता है. कहते the highest chakras are the centers of the upward traveling energy. There are many levels of consciousness from the heart chakra to the 1,000 petal lotus inside the crown of the head. ये देखा है हमने जब डीप मेडिटेशन स्टेट में पहुंच जाते हैं तो किस तरह से वो जो 1,000 petal lotus के कैसे खुल जाते हैं crown of the head में. कहते हैं when one sits erectly for meditation, these centers are aligned. तो शायद इसी करके बोला जाता है कि आप अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल स्ट्रेट करके बैठे ताकि आपके सेंटर्स जो भी हैं बिल्कुल अलाइन हो जाए. Energy can be focused on one chakra or another, developing the capacity to direct the flow of energy to the higher chakras is one aspect of spiritual development. मुझे लगता है कि जो लोग क्योंकि मैंने कभी इस तरह से मेडिटेशन नहीं की है, for me meditation means sitting in gratitude for Guruji. अब उसमें पीठ का भी मुझे ध्यान नहीं होता, कभी नीचे हो जाती कभी ऐसे हो जाती है, but yes definitely जो लोग मेडिटेशन उस हिसाब से करते हैं, जिनको चक्रास की नॉलेज है, I think they will really understand, because I'm just speaking, I'm not understanding it very thoroughly. तो जिनको चक्रास का नॉलेज है, ये स्पाइनल कॉर्ड्स को कैसे कैसे करते हैं कुंडलिनी के बारे में, तो they can easily understand this. Okay, knowledge of pranic vehicles is important if one wants to experience all the chakras systematically. There is a bulk of literature on the chakras in Hinduism and Buddhism, which was later explained and introduced by theosophical writers for Western readers. Western writers have also written many books on the subject of chakras, although most of them, with the exception of those written by Sir John Woodroffe, are misleading. कहते हैं ऐसे तो देखो बहुत लोग आपको मिल जाएंगे चक्रास पे बहुत किताबें भी लिख रहे हैं, पर कहते हैं सिर्फ एक सर जॉन थे जिन्होंने बिल्कुल सही तरीके से लिखा है. Most of the books they just mislead you. कहते for they consist merely of second hand information. वो तो सिर्फ second hand information है ना, first hand information नहीं है, वो indirect knowledge है, direct knowledge से नहीं दी उन्होंने. Without anything to guide one's practice, such misleading literature on such a highly perfected science is found all over, even in health food stores. How ridiculous! कहते ये तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, बड़े आराम से मिल जाएगी, इवन हेल्थ फूड स्टोर से, बिकॉज लिखने का क्या है, कोई भी कैसा भी लिख दे, their sole purpose is that their books should sell like hot cakes, not knowing that the information which they have written is not the first hand information. कहते how ridiculous. Swami Brahmananda was one of the rare siddhas, accomplished ones, who had knowledge of Shri Vidya. So Swami Brahmanand ji हैं जिनको thorough knowledge थी Shri Vidya के बारे में. His authoritative knowledge of the Upanishads and especially of Shankara's commentaries was superb. He was also a very good speaker. Swami Karpatri, a renowned scholar, was a disciple who requested him to accept the prestige and dignity of Shankaracharya in the north, a seat which had been vacant for 300 years.
Whenever he traveled from one city to another, people flocked in the thousands to hear him. And after his nomination as Shankaracharya, his followers increased. One thing very attractive about his way of teaching was his combination of the bhakti and Advaita systems. During my brief stay with him, he also talked about Madhusudan's commentary on the Bhagavad Gita. Swami Brahmanand had a Sri Yantra made out of rubies. And as he showed to me, तो स्वामी ब्रह्मानंद जी ने अपना कोई यंत्र बनाया था जो रूबीज जो जेमस्टोन्स होते हैं उसका बना हुआ था कि they explained the way he worshipped it. It's interesting to note how the great sages direct all the spiritual, mental and physical resources toward their ultimate goal. Among all the swamis of India, I met only a few who radiated such brilliance and yet lived in the public, remaining unaffected by worldly temptations and distractions. I stayed with him for only a week and then left for Uttarakanshi. स्वामी जी कहते हैं, स्वामी राम जी, कुछ ऐसे भी मैं मिला हूं जो चाहे दुनिया में भी रहे पर उन्होंने दुनिया की चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, वो वर्ल्डली टेम्पटेशंस में नहीं फंसे, डिस्ट्रैक्शंस में नहीं फंसे. ओके, अब स्वामी जी बोल रहे हैं 3 schools of tantra. Swamiji कहते, I was asked by my master to go learn from a great tantric teacher who lived in the Malabar hills of South India. The teacher was 102 years old. उनके मास्टर ने उनको भेजा भी, एक तांत्रिक टीचर थे, वो मालाबार हिल्स में रहते थे और 102 साल उनकी उम्र थी. कहते he was calm, learned and healthy. Though he lived a householder's life, he taught many advanced yogis as Swami the philosophy of Tantra. There is a vast amount of literature on the philosophy and science of Tantra, but it's not easily understood and is often misused. This highly advanced esoteric science has been practiced by Hindus, Jains and Buddhists. कहते हैं द खुदा बख्श लाइब्रेरी ऑफ पटना, एक लाइब्रेरी है खुदा बख्श नाम से पटना में, एंड द बड़ौदा लाइब्रेरी एंड द मद्रास लाइब्रेरी are filled with manuscripts on the subject, but this literature is beyond the understanding of layman. कहते हैं आम आदमी नहीं समझ सकता, उसकी समझ से परे है. Also, competent teachers of Tantra are rarely available. However, properly practiced under a competent teacher, this path is the equal of any other spiritual path in self-enlightenment. कहते अगर आप इसको बहुत ढंग से प्रैक्टिस करें, एक अच्छा टीचर मिल जाए, तो ये भी इक्वली है जो सेल्फ एनलाइटनमेंट का path है, sorry. कहते according to the science of Tantra, male and female are 2 principles of the universe, Shiv and Shakti. कहते साइंस के मुताबिक मेल और फीमेल 2 हैं, स्वरूप हैं अपने यूनिवर्स के, शिव और शक्ति के रूप में. These 2 principles exist within each individual. हर इंडिविजुअल के अंदर शिव शक्ति है, शिव शक्ति हर एक के अंदर समाई है. कहते there are 3 main schools of Tantra. कौन से मेन स्कूल्स हैं? Kola, Mishra and Samaya. The Kolas or left hand tantris worship Shakti. जो Kolas और left hand tantris हैं, कहते वो शक्ति की upasana करते हैं, and their way of worship involved external rituals including sexual practices. They meditate on the latent power with kundalini and awaken it at the Muladhara chakra, which is situated at the base of the spinal column. Laymen often misuse this path. In the Mishra mixed or combined school, inner worship is combined with external practices. The latent force is awakened and led to the Anahat chakra, heart center, where it is worshipped. The purest and the highest path of Tantra is called Samaya or Samya, or the right hand path. It is purely yoga. It has nothing to do with any ritual or any form of worship involving sex. Meditation is the key, but this sort of meditation is quite uncommon. And the school meditation is done on the 1,000 parallel lotus, the highest of all. This method of worship is called Antaryagya. The knowledge of Sri Chakra is revealed in this school. Knowledge of the chakras, nadis, subtle nerves, currents, and pranas, vital forces, and a philosophical knowledge of life are required in order to be accepted as a disciple in this school. तो ये तो बड़ा टफ सा है ना, कहते हैं इन चीजों की नॉलेज होगी तभी आप स्कूल में अपना जो भी एडमिशन काइंड ऑफ ले सकते हैं. I was acquainted with all 3 schools, but was initiated in the path of Samaya. Samaya, I don't know how they call it, Samya or Samaya. My favorite books explaining this science are The Wave of Bliss. तो स्वामी जी कहते मुझे तो जो मेरी पसंद की किताब थी ना वो थी वेव ऑफ ब्लिस, जिसको आनंद लहरी कहते हैं, एंड द वेव ऑफ ब्यूटी सुंदर लहरी कहते हैं. कहता है I stayed with this teacher for 1 month, learning the practical aspects of this science and studying various commentaries on these 2 scriptures. Then I returned to the mountains.
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वामी जी को ईश्वर ने कहा हो कि इधर एक ही जन्म है, जितने साधुओं को मिलना है, जितने सेंट्स को मिलना है, जो तुमने करना है ये आखिरी जन्म है, सब कर लो। तो ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि दिस इज समथिंग अनबिलीवेबल एंड इनक्रेडिबल कि जिस तरह से स्वामी रामा जी इतने 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 स्वामी से मिले, हर कोई विद्या नहीं छोड़ी। दिस इज समथिंग really, it's very astounding actually. नेक्स्ट है द सेवन सिस्टम्स ऑफ ईस्टर्न फिलोसफी। अभी ये स्वामी जी बताने जा रहे हैं। Okay. कहते I often visited Dr. Ranaday of Allahabad University, one of the finest exponents of Vedanta philosophy of his time. This matchless teacher and great mystic was popularly known as Gurudeva among his disciples. He took me to his Nembal ashram later on. Among all the university scholars of India, I have the most respect for this great man. So Swami ji ki bahut, he has that very very deep reverence for this Dr. Ranaday of Allahabad. कहते whatever I have systematically learned about Indian philosophy was because of him. He taught me that Indian philosophy is divided into 7 systems. तो 7 में divide है Indian philosophy, which attempts to answer the most basic philosophical inquiries. These important questions are, कहते अभी important questions है क्या? Number 1, who am I? मैं कौन हूँ? From where I have come? मैं कहाँ से आया हूँ? और क्यों आया हूँ? Why have I come? What is my relationship with the manifold universe and other human beings? मेरा रिश्ता क्या है इस यूनिवर्स में और बाकी इंसानों के साथ? Number 2, what is the essential nature of my being and what is the essential nature of the manifested world and its cause? Number 3, what is the relationship of the center of consciousness and the objects of the world? Number 4, what is the nature of the forms and the names of the objects of the world, and how do they serve the essential nature of man or universal consciousness? Number 5, what are the guidelines for action as long as we live in the natural body? Do we live after death? Okay, sure. ये तो हमें गुरुजी ने पहले ही पढ़ा दिया, laws of spirit world. Laws of Spirit was a very, very, very interesting book. उसमें हमें ऊपर की दुनिया के बारे में पता चलता है, and we know that it revolves around the life after death, and how और उसके साथ साथ हमें इस जीवन का भी वो जीना बताते हैं, so that so that we come to know for what purpose we have come और कौन सा लेना देना हमने आए हैं. But yes, this book is different. This book is about the Himalayan masters. This book is about कि yes, ये कैसे 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 भक्ति वाला मार्ग क्या होता है, राज योगा क्या होता है, या फिर जितने भी ये इतने बड़े बड़े सेंट्स हैं ये कैसे तपस्या करते हैं और कैसे 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 इनके क्या टेस्ट होते हैं. This is also a very very different book. Number 6, what is truth and how do we arrive at rational conclusions on questions of truth? The 7 systems of Indian philosophy which address themselves to these issues are Vedanta, Yoga, Sankhya, Vaisheshika, कई बारी मेरे से ना वो चीजें गलत भी पढ़ी जाती हैं, Mimamsa, Nyaya, and Buddhism. The dates given for the teachers of the system below have been determined by Western scholars. Scholars within these systems regard them as many millennia older. अब वेदांता क्या है? कहते I am self-existence, conscious, and bliss. These are not my attributes, but my very being. I do not come from anywhere or go anywhere, but rather I assume many forms, having many times. वो तो है ही है, आत्मा कितने कितने जन्म लेती है. कहते my essential nature is free from all qualifications and limitations. तो essential nature की जो आत्मा की है वो तो free ही है ना. कहते I'm like an ocean and all the creatures are like the waves. The individual soul is essentially Brahman, all-inclusive, all-expansive. The genderless Om in its name, it's the nucleus, and the universe is its expansion. It's the absolute, transcendent, attributeless reality, and is also eternally embodies the capacity to bring the measure within itself its own inner Shakti. So this power of Brahman called Maya emanates and gives the appearance of becoming manifold, but the truth, there is no manifoldness, and the infinite never becomes finite. This is a superimposition of the finite on the infinite, which is eradicated by unveiling reality again. Then one realizes himself to be in Brahman as Brahman. He identifies himself with Brahman and becomes one with it. Below are some of the most important statements of the Vedanta philosophy as found in the Upanishads. देखो जो I think it's written in a very complicated language, but I just feel कि yes, अगर हम इसको निचोड़ निकाले तो we all are souls, और जब हम उस absolute reality को देखते हैं, हम कहाँ से आए हैं,
that is our, eternally, we all are eternal creatures. वो हमारा जो main essence क्या है, that we are children of Almighty, हम सब उनकी ही आत्माएं हैं. फिर हम और आप में, जिसको हम सोहम कहते हैं, जैसे प्रभु आप वैसे ही हम, तो वो मिलन एक हो जाता है. Okay, number one, there is nothing manifold here. From death to death, he wonders who sees anything here as though it were manifold. Number two, he who is tranquil dwells in Brahman, from whom the universe emanates and into whom it dissolves. Number three, all this is Brahman. Number four, Brahman is pure gnosis. Number five, the self is Brahman. Six, that thou art. Seven, I am that. Eight, I am Brahman. Okay, the philosophy which was taught by the seers of the Vedas 2000 to 500 BC was passed down through a long line of sages such as Vyasa, Gaurapara, and Govindapara, the author of many ancient scriptures, who codified these ancient philosophies. Shankaracharya finally systematized the monastic schools in the 8th century AD, and many acharyas after him established various schools of non-dualistic and dualistic philosophies, which differed from him. Ab yoga kya hai? Kehte, in the yoga system of philosophy, the individual soul is a seeker, and cosmic consciousness is the ultimate reality it finds within. Yoga accommodates all religions and all systems of philosophy as far as the practical aspects are concerned. While dwelling in the manifold phenomena of the universe, the soul must take care of the material body. तो आत्मा को जो व्हीकल मिला है ना अपने शरीर का, उसका भी ध्यान रखना है. Purifying and strengthening its capacity. In this system, the individual must practice the highest principle of behavior and the control of the various modification of mind through the commitments called yama and niyama. Yam and niyam, by practicing stillness in posture and breath, and then transform oneself by having control over the senses with concentration and meditation, and finally attain samadhi. The final goal of this system is to attain kaivalya, that is aloneness. This yoga system was also known several millennia before Patanjali, who codified in the 1st century AD by compiling 196 aphorism called the Yoga Sutras. The yoga and the Sankhya system of philosophy are alike. तो ठीक है, ये योगा के बारे में हो गया. और संख्या क्या है? The Sankhya system is dualistic and believes the conscious Purush and the unconscious Prakriti to be separate coexistence and interdependent realities. कहते, in Sankhya, the conscious principle is again twofold. It consists of the individual soul, Jiva, and the universal soul or God, Ishvara. In other systems of Sankhya philosophy, the existence of God is irrelevant. All the schools of the Sankhya system believe in removing the pains and miseries which arise from Purush's involvement with Prakriti, forgetting its ever pure, ever wise, and ever free nature. Like a rope with 3 strands, Prakriti has 3 attributes. Prakriti ke 3 attributes hain, kya hai? Called Sattva, Rajas, and Tamas, tranquility, activity, and sloth. All phenomena of the universe, including mental operation, are nothing but interactions among these 3 gunas, qualities of Prakriti. These bring to manifestation various aspects which remain in unmanifested form in the cause. When the 3 gunas are in balance, Prakriti is in a state of equilibrium. The mental and physical universe is created and passes through 24, 36, or 60 states that include all phenomena and experiences. All the schools of Indian philosophy have included something like Sankhya philosophy in their systems. This system kya hai? This system is very basis of Indian psychology. It gave birth to the positive science of mathematics and then to medical system of India. For to understand the body is to understand all human nature. The founder of the Sankhya school was Asuri and Kapila, one of the ancient seers, is called the Acharya of the science. Then followed Ishvara, Krishna, who systematized the philosophy into Sankhya Karika around the 3rd century AD. अब आगे क्या है? कहते वैशेषिका क्या है?
The philosophy deals with the physics and chemistry of the body and the universe, discussing the particular elements like the atoms and the mutual interactions. Kanara, perhaps 300 BC, states the subjects of his philosophy to be dharna, the code of conduct which leads human beings to prosperity in this life and the highest good in the next. The philosophy discusses 9 subjects. So 9 subjects किसके बारे में discuss करती है philosophy? Earth, water, fire, air, space, time, dimension, mind, and soul, and their mutual relationships. This philosophy was developed by Prashahastapada in the 4th century AD. Next is Mimamsa. So I'm just going to read as it is written because this again is complicated thing. Mimamsa. The Mimamsa system was founded by Jaimini. In the system of Vedas are accepted as self-evident scriptures revealing eternal knowledge. The system believes in salvation through action. It established a detailed philosophy of the efficacy of ritual worship and ethical conduct, which developed into philosophy of karma. This school challenges the predominance of grammarians and logicians who maintain linguistic and rhetoric. It is a school of philosophy in action. Jaimini's date was perhaps 400 BC. Next, Nyaya, N-Y-A-Y-A, Nyaya. Nyaya is the school of logicians founded by Gautam, one of the ancient sages. It regards doubt as a prerequisite for philosophical inquiry and elaborates rules for debate. All the school of Indian philosophy to this day follow the Nyaya system of logic, which was further developed in the 16th century and which is now called neologic, a complex system similar to mathematical logic in the West today. Next step, Buddhism. Gautam, the Buddha, was born 2,600 years ago in Kapila Vatsu at the site of ancient ashram of the sage Kapila, who is one of the founders of the Sankhya philosophy. Gautam studied this philosophy in depth under a teacher named Adar Kalama. जो गौतम जी थे, बुद्धा जी थे, उन्होंने ये philosophy पढ़ी थी, and he later discovered the 4 noble truths. तो गौतम जी ने क्या discover किए 4 truth? Number 1, there exists sorrow. Yes, दुख है दुनिया में. Number 2, there is a cause of sorrow. दुनिया में दुख का कारण है. Number 3, the sorrow can be eradicated. इस दुख को खत्म किया जा सकता है. Number 4, there are means for the eradication of sorrow, और means भी है, माध्यम भी है, वो चीजें भी हैं जिनकी सहायता से आप इस दुख को खत्म कर सकते हैं. These four noble truths are already found in the Yoga Sutras of Patanjali, but the difference lies in Buddha's doctrine of anatta or non-self. The word neti, not this, was fully understood by the ancient rishis, Vedic seers. The Buddha refused to participate in metaphysical speculation. He would not discuss the existence of God, and he would not answer the question of whether the Buddhas exist after nirvana. He said that such questions are not worthy of consideration. The enlightened one, a highly practical teacher, wanted his disciples to practice the eightfold right path of action, what would lead them to Bodhi, the finest level of consciousness. He accepted Pali as a language for communication. After Buddha's paranirvana, various groups of monks started following their own way. There then formed 2 major schools, Theravada, the doctrine of the elders, and Mahayana, the formal philosophical school of Buddhism, which disappeared in India. Great volumes have been written on the major historical and doctrinal differences between the 2 paths. Theravadins considered the teachings of Buddha to be completely separate from the rest of the Indian philosophical developments. They retain Pali as a medium to study the scriptures, although not a great deal of philosophical speculation developed in Pali. The Buddha remains their enlightened teacher, and great temples having beautiful statues were built to honor him, where ancient Hindu-style puja worship is still offered. This doctrine does not accept Buddha as a savior. However, each person finds his own light, is then enlightened, and finally reaches anatta or non-self. The Mahayana debated with other schools of Indian philosophy and was forced to adopt the sophistication of the Sanskrit language. One of the greatest scholars, Nagarjuna, described Shunya and calls it the void, the storehouse of consciousness, alaya, vijnana, or
of the Vijnana Vedin school is cosmic consciousness. Hindus had begun to accept the Buddha as the ninth incarnation of God, but the Buddhists were at a loss to fulfill the spiritual call and the human need for devotion to a higher being. So they developed the thought of a higher reality that incarnates. Here the Buddha has three bodies or levels of existence. So three body kya hai? Dharamkaya, the absolute being like Shukla Brahman of the Upanishads. Number two, Sambhogakaya, the universe as the emanation like Shabhala Brahman of the Upanishads, and Ishwar or personal God. Number three, Nirmankaya, the historical body of the Buddha, an avatar or incarnation. The Mahayana school still uses Kundalini and knowledge of chakra in their teachings. Visualization of symbolic figures and elaborate ritualistic preparations are used exactly as Hindus do. Faith and the surrender to a higher compassionate being are practiced exactly as they were taught in Hindu scriptures. The Buddha's own path was Majjhima Patipada, the middle way. The Buddha's teachings were primarily for the monks, but like other Asian teachings, Buddhism became a way of life for a large section of people in the world. By following this middle path, one can eradicate avidya, ignorance, which leads to tanha, craving. Only then one can gain freedom from sorrow, pain, and misery. These 7 systems deal with various aspects of reality and truth. They hold a higher transcendental goal as sacred and agree on some basic essentials. For this reason, the syncretic literature of India, such as the Puranas and epics like the Mahabharata and Ramayana, regard all these systems are authentic. So, candidly speaking, it was too complicated for me. I really didn't understand anything. Okay, next is Soma. ये है न्यू चैप्टर सोमा. कहते स्वामी जी कहते हैं, I read a book, मैंने एक किताब पढ़ी, written by a mountain scholar who did research on Soma. कहते एक माउंटेन स्कॉलर थे ना, उन्होंने रिसर्च की थी सोमा के ऊपर. एक फेमस हर्ब है जिसको ना हिमालय मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है. कहते I read a book written by a mountain scholar who did research on Soma, the famous herb used by the Himalayan medicine men in the worship and rituals. जो भी अपने रिचुअल्स करते हैं, जो भी वो अपनी पूजा करते हैं, उसमें वो उसका उपयोग करते हैं. कहते a portion of the Vedas talks about this herb, how it is used, the way it is prepared and where it grows. तो कहते जो पोर्शन है ना वेदास में, उसमें इस हर्ब का ना जिक्र है कि कैसे ये प्रिपेयर की जाती है और ये कहाँ ये उगाई जाती है. कहते that book created a curiosity in my mind and I contacted the writer. तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो स्वामी जी ने छोड़ी हो. स्वामी जी कहते नहीं. You know, I became really curious and I wanted to contact the writer. The writer introduced me to Vaidya Bhairavdutt, a famous herbologist of the Himalayan mountains, who was considered to be the only living authority on Soma. Okay, इसको contact किया उन्होंने. कहते he's no longer living, but his center and laboratory continue to supply herbs to various parts of the country. कहते he was well versed in the scriptures too. The herbalist promised to bring the herb and also tell me how to use it. तो herb लाई गई और मुझे बताया गया कैसे इसका उपयोग करना है. He said that it's a creeper which grows above 11,000 feet. There are only 2 or 3 places where it grows at that altitude. I gave him 1,000 rupees for his traveling expenses, and after the winter was over, he brought me somewhat less than a pound of that creeper. So Swami ji ke liye ye creeper आया. Swami ji ने उसको पैसे दिए थे. He then prepared the soma, and soma जो भी कहते होंगे इसको. I hope maybe it's somras or what. He then prepared the som, and we experimented with it on those sadhus who use marijuana and hashish. ये तो जो साधुस ऐसे ड्रग्स का उपयोग करते थे ना, marijuana और hashish का, उस पे हमने सोचा कि चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं. The use of this herb created a fearlessness in them. The descriptions of their experiences were somewhat similar to those of Westerners who had ingested psychedelic mushrooms. So मुझे लग रहा है कुछ ऐसे वो ऐसा कुछ वो psychedelic चीजें होंगी ना जिससे hallucinations आती हैं. कहते the herbologist explained to me that there are several varieties of mushrooms which have similar effects. However, he said that Soma creeper was definitely not from the mushroom family, but that it was from the succulent family. In an ancient Ayurvedic text, varieties of mushrooms are described with details of their color, size, and the way they are used.
मशरूम से मुझे याद आया कि जैसे गुरुजी की वो संगत है फगवाड़ा में, पूनम आंटी हैं, उनके घर से लंगर में, बिकॉज मुझे लगता है उस टाइम पे वो मशरूम फार्मिंग कर रहे थे। आई रियली डोंट नो इफ स्टिल दे आर डूइंग। तो उनके घर से हमेशा वो मशरूम का अचार भी आया जाता था, आता था। आई स्टिल रिमेम्बर एक बारी डिफेंस कॉलेज में गॉट समथिंग, तो गुरुजी कहते की ले आई हैं। मैं क्या गुरुजी मशरूम, कहते मशरूम। मैं क्या नहीं गुरुजी मशरूम। गुरुजी कहते हाँ स्टाइलिश आंटी मशरूम्स। So whenever I used to come, I used to say mushrooms. So it just, happened. I mean, instantly I could recall that divine experience with Guruji. Okay. कहते हैं कि, however, he said that Som creeper was definitely not from the mushroom family, but that it was from the succulent family. In an ancient Ayurvedic text, varieties of mushrooms are described with details of their color, size, and the way they are used. The text indicates that the ancients also used these for psychic experiences, although the books on cacti and succulents do not use the name Som for this creeper. Other succulents do not produce the same effect. There are few herbs. अब ये few herbs कौन सी हैं? Agaricus, then is Hyoscyamus and Stramonium, which are poisonous, but in small doses have hallucinogenic properties. तो इस तरह से ये herbs है ना जिनका इफेक्ट होता है, आपको hallucinations आती हैं, या मुझे लग रहा है उनको उस तरह का आनंद आता हो जो deep meditation में आता है, they feel high. It is important to know that proper quantity is used in it's important to know the proper quantity in using these herbs. Okay, उसके बाद है कहते हैं the ancients wrote so much about Som and mercury preparation that some scriptures describe hundreds of ways of preparing such intoxicants for human usage. Such external stimuli, however, are not permitted to be used in any of the schools of yoga. There are inferior sects of sadhus who use some of these herbs without knowing their proper usage. तो कहते कुछ ऐसे हैं, इतने वो sects हैं साधु के जो थोड़ा ये herbs वगैरह use करते हैं, पर उनको ये नहीं पता कितने usage उनको use करनी है. Okay, these sadhus are often found dumb, sitting here and there. The ancient medicine men know how and when to use such herbs. Homeopaths recommend a single dose of, arsenicum, 10 mg to dying patients for fearlessness, and hemlock poison was used by Egyptians and Greeks on the deathbed so that the dying person would feel no pain and could accept death pleasantly. तो ये जिसकी arsenicum की बात की गई है, कहते उससे क्या होता है ना, बंदा fearless हो जाता है, तो ऐसा दिया जाता था Egyptians और Greeks जब वो उनके डेथ बेड पे जो इंसान जिसके प्राण जा रहे हैं, ताकि वो डरे ना और उसकी डेथ इतनी वो पेन वाली ना हो, प्लेजेंटली हो जाए इस दुनिया से. कहते similarly the use of Som was especially recommended by the mountain herbalist of India to turn the mind inwards, and they included this herb in rituals which became part of the religious ceremonies of the ancient Aryans. कहते Patanjali, the codifier of yoga science, says in the first sutra of the 4th chapter of the Yoga Sutras that Aushadhi, medicine prepared from herbs, can help one in having psychic experiences. तो इससे psychic experiences आ जाते हैं, इस तरह की properties होती हैं ऐसी herbs में. कहते these psychic experiences have some validity and are higher than the experiences we receive through the senses, but they are definitely of no use as far as spirituality is concerned. The Som juice mentioned in the Asian literature was used to help inferior students who were not capable of sitting in one position for a long time and did not have the ability to concentrate their minds. तो कहते पुराने टाइम पे ना ये सोमरस का जूस जो भी है रस उनको दिया जाता था, जो स्टूडेंट्स है ना जो एकदम से इतनी लॉन्ग पोजीशन में नहीं बैठ सकते थे. कहते this herb affects the locomotor system and makes one insensitive to external stimuli, so that thoughts start running in one direction. The body becomes still and free of pain. Some of those who did not practice steady posture through systematic discipline use Som along with the ritual worship before meditation. तो किस तरह से वो इसका उपयोग किया करते थे ताकि वो एक posture में बैठ सके और उनको पेन ना हो. This was not as common as
psychedelics of today, the use of this herb was restricted and controlled by a particular tradition of herbologists who spend their whole lives researching and experimenting on the use of various herbs. तो इस चैप्टर में स्वामी जी थोड़ा हर्ब्स के बारे में बता रहे हैं जो माउंटेन्स में पाई जाती हैं और कैसे कैसे उनका किस तरह से डोज लेते थे और क्या उपयोग है इनका. कहते अकॉर्डिंग टू वैद्य भैरवदत्त administering these intoxicants with the use of mantra was a common practice. Mantras were used in solitude while fasting and other austerities under the guidance of an expert. A sect of sadhus was custodian to this knowledge. For those who have not practiced austerities and trained their minds, psychedelics are harmful. They might damage the nervous system and especially disturb the finer channels of energy. Hallucinations occur and one may become psychotic. I have examined the effects of drugs on people who have used them and have not found any spiritual systems in their behavior. They might have an unusual experience, but what good is that experience which has an adverse effect and a harmful reaction later on? So Swami ji कहते हैं ऐसे experience का क्या फायदा ना? This is little pernicious after that. आपको नुकसान पहुंचाए. कहते a prolonged subtle depression is a common symptom of these drugs if the mind is not prepared and dietary habits are not carefully observed. A healthy diet, calm atmosphere, mantra and guidance were important factors when somras was used. उसके बाद कहते स्वामी जी कहते I heard from the herbologist that he himself used what he called somras. Actually, I had no way of verifying whether it was indeed the som used by the ancients or something else. He said that it had a very pleasant and elevating effect, but if he used it regularly, it brought on a depression as a reactionary effect. He also came to the conclusion that the repeated use of such herbs can also lead to psychological addiction. तो इस herbs का ये after effect ये भी होता है, depression में बंदा जा सकता है और आपको इसकी addiction भी हो सकती है. But he persuaded me to try it once, saying it's wonderful. You have never had an experience like it before. One morning, he prepared the juice of Ashtavarga, a mixture of 8 herbs, and mixed some som creeper juice in it. तो एक बारी तो कहते एक सुबह उन्होंने ऐसे वो मिक्सचर सा बनाया ना जिसमें वो 8 herbs भी डाली थी और ये सोम जूस का रस भी डाल दिया. कहते we both drank this mixture. Its taste was a little bit bitter and sour. After a while, he started chanting and swinging, and ultimately threw off all his clothes and started dancing. So literally, I think he just went bonkers, you know. कहते इसका टेस्ट ऐसा था, थोड़ा सा कड़वा भी था, थोड़ा सा खट्टा सा भी था. उसके बाद क्या हुआ, उसको चैंट करना शुरू हो गया, started swinging and ultimately threw off all his clothes and started dancing. But I had a severe headache. Swami ji कहते on the other hand, I felt so dizzy, मेरा तो सिर दुखने लग गया. I felt as though my head were going to blow up. I held my head in both my hands. The man who used to attend me could not understand why we were acting so peculiarly. He shook his head in puzzlement and said, Lord, one is dancing outside and the other is sitting in the corner of the room holding his head. I became so restless. I felt like jumping into the Ganges, crossing it and running away into the forest. It was a chaotic experience. Swamiji couldn't take it. उनका तो सर ऐसे घूमने लगा, दोनों हाथों से उन्होंने पकड़ लिया. कहते मैं तो forest की तरफ भागने लग गया. It was like chaotic experience. As he danced, the herbologist began shouting that he was Shiva, the Lord of the universe, and cried, where is my Parvati? I want to make love to her. This disturbed all the students who came to visit me in the morning. They tried to restrain him, but he began so strong that 5 people could not hold him down. So just imagine the after effect. That man went bonkers. Though he was a slightly built man, he threw them off one after another. I saw what was happening from a window, but I did not come out of my room because of my heavy head. Another Swami bought 3 quarts of warm water and told me to do an upper wash. Ye upper wash kya hai? This yogic technique for cleansing the stomach involves drinking a large quantity of water and then vomiting it up. This relieved me a bit. थोड़ा सा better महसूस हुआ. This experience which occurred during my stay at Ujali Ashram in Uttarakhand disturbed the whole routine of the ashram, and I didn't know how to explain it to my students. After a careful study of the use of psychedelic preparations over a number of years, I have concluded that the harm they can do far outweighs any positive benefits they might have. तो स्वामी जी ने यही conclude किया ना, कोई भी इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हो ना, जो इसका हार्मफुल इफेक्ट है ना वो ज्यादा ही है.
Those who are not psychologically prepared will have negative experiences either when they ingest the intoxicant or later. Those who are prepared don't need such drugs. वो तो बात सही है, हमें तो गुरुजी ने वैसे ही अपनी गुरबानी को और प्यार का इतना नशा दिया हुआ है that you really don't need anything to feel intoxicated, because we all get intoxicated with with the divine ecstatic love of Guruji. That's I mean that involves everything. That love has everything that you don't really need to feel high. You don't have to take anything else, because his love is so divine and so ecstatic, so blissful, that it just kind of, you soak yourself, you immerse in that ecstasy of his love. तो कई चीजें हैं संगत जी, वो तेज पढ़नी पड़ती हैं। गुरुजी कहते दवा पढ़। और बस हाँ, ओवरऑल जस्ट हमें पता चल गया कि हमें यहाँ स्वामी जी थोड़ा अवेयर करें, क्योंकि हिमालयन लाइफ के ऊपर है। तो फिर वो जिस तरह के वहां पर, वैसे सोमरस तो हमें सुना हुआ है जो इंद्रलोक में भी, देवता लोग भी लेते हैं, तो कई ऐसी चीजों को क्या इफेक्ट हो सकता है। कई लोग तो स्वामी इस करके लेते हैं ना कि जो इतनी देर बैठ के मेडिटेशन से उनको इफेक्ट नहीं आता, तो इस रस को लेकर जिस तरह की भी उन्होंने हमें ऑल बताई हैं चीजें, उनको मे बी समटाइम्स दीज थिंग्स हेल्प provide help to them, or it facilitates the process of sitting in a particular posture. अब नेक्स्ट क्या है, इस बुक में 14 चैप्टर्स हैं, और 14 चैप्टर्स के अंदर सब चैप्टर्स हैं। वी हैव रीच्ड 8th चैप्टर, दैट्स बियॉन्ड द ग्रेट रिलीजन्स। कहते all the great religions of the world have come out of the one truth. एक ही truth है। If we follow religion without practicing the truth, it is like the blind leading the blind. बिल्कुल कोई भी religion आप follow करो, सच्चाई को आप follow नहीं कर रहे हो, practice कर नहीं रहे हो, तो वो क्या है? It's like blind leading the blind. Those who belong to God love all. कोई रिलीजन नहीं है ऊपर भी, हमें द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड में हमें बहुत अच्छी तरह विस्पी जी और रतु जी ने बताया था। ओनली वन गॉड एंड एवरीबॉडी इज but everybody is praying according to their religion, but as such there is no religion, but there is only one God. कहते हैं those who belong to God love all. Love is the religion of the universe. A compassionate one transcends the boundaries of religion and realizes the undivided absolute reality. ये तो बिल्कुल सही है। जो compassionate होते हैं ना, वो इन religion वाली boundaries को पार करके ना, वो एक ही absolute reality का ध्यान देते हैं। जो अगले कुछ chapters हैं ना, they are going to be beautiful, because they're going to describe about in the coming later chapters, we're also going to know about Lord Jesus. Even he practiced meditation in Kashmir, और ये बहुत 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 अच्छी चीजें होने वाली हैं आगे जाके। और ये मैं हाँ, थोड़ा गुरुजी का सत्संग। एक बारी जहाँ पर एक्वेरियम पड़ा है डिफेंस कॉलोनी में, जैसे आप एंटर करते हैं और किचन के उधर, तो गुरुजी हमेशा बाहर खड़े होके वहां ओम ओम ऐसा बजिंग साउंड करते थे, बहुत ज्यादा बजिंग साउंड करते थे, और वो अभी तक कानों में गूंजता है। गुरुजी वुड स्टैंड विद हिज लेग्स क्रॉस, जैसे कहीं जब संगत चले जाती थी, थोड़े बहुत रह जाते थे, लंगर कर रहे होते थे, गुरुजी बजिंग साउंड करते थे, और फिर गुरुजी कमरों में चले जाते थे। फिर हम लोग जैसे जितने भी थोड़ी बहुत संगत होती थी, हम कार्पेट्स में, रेड कार्पेट के ऊपर जितने जितने छोटे छोटे कण होते थे ना, उसको उठाते थे। फिर गुरुजी खुद मॉनिटर करके सफाई करवाते थे। थे जाले लग गए ने, अथे साफ करो। किसी ने वो जो भी ब्रास और उसकी शिव जी की मूर्ति है, किसी ने वो पकड़ लेना, किसी ने अखबारें पकड़ लेनी, शीशे साफ करने। तो उस टाइम रात को यही लगता था कि अब तो ये सब शिवलोक बन गया है, क्योंकि एक एक कण उठाना। और फिर गुरुजी कमरे में चले जाते थे, फिर आ जाते थे कभी टी शर्ट और अपनी लोअर पहन के। फिर गुरुजी ने कहना मेरे थे शूज रख दे, मैं सवेरे 5 बजे सैर करने जाना है। तो एक बारी मैं बताती हूँ, बहुत पहले गुरुजी के वो शगुन अंकल होते थे, वो ड्राइवर होते थे, तो काफी संगत तो चले ही गई थी, कोई भी नहीं था। इवन आई डिडंट वांट टू गो, उस टाइम तो सब चले गए थे। आई गेस आई वाज द ओनली वन लेफ्ट देयर। तो मेरे को था कि मैं आई रियली डिडंट वांट टू गो फ्रॉम देयर। तो मैंने क्या किया, थोड़ी सी शैतानी सी की, अपना रिंग वहां रख दिया
कि चलो गुरुजी तो चादर नीचे ओढ़ के सो गए, क्योंकि गुरुजी बेड पर तो कभी नहीं सोते थे। तो शगन अंकल जी उनकी थोड़ी सेवा कर रहे थे, मैंने जान के रिंग रख ली, चलो इसी बहाने दोबारा से गुरुजी बुलाएंगे। ऐसा ही हुआ। जब बाहर निकले, थोड़ा आगे गए, फिर फोन आया, फिर वापस आए, जो कि मैं जान के छोड़ के गई थी रिंग, बिकॉज आई डिडंट वांट टू लीव गॉड ऑलमाइटी। आपका मन ही नहीं करता था जाने को। तो गुरुजी ने, चलो अपनी मौज होती थी, कभी 3 बजे भी भेज देना, रात को 4 बजे भी भेज देना। और इस बुक में अब मुझे पता नहीं वो संगत जी वो कब लाइन आएगी, बिकॉज एज आई सेड दैट आई रेड दिस बुक 2 times, बट इट्स बिन लॉन्ग टाइम, इट्स बिन लाइक आई वुड से इट्स बिन एजेस। तो इस बुक में ऐसा एक वर्ड आता था, चेलो, CHELO, आई गेस सो। गुरुजी हमेशा सबको कहते थे चेलो, और when I came across this word and I was like, oh गुरुजी, मतलब गुरुजी अपना एहसास दे देते हैं। तो ये किताब भी गुरुजी का कोई मकसद है पढ़ाने का। तो कई चीजें आपको लग रही होंगी, क्योंकि कई बार संगत की मुझे मैसेज आता है कि आंटी लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड ऐसे थे। देखो, वी इट वुड बी रियली रियली रॉन्ग इफ वी कंपेयर द टू बुक्स, यू नो। दैट वाज entirely different book on one thing, you know. It was all about the soul journey, it was all about this life and the world out there. उस बुक ने हमारे अंदर से जो डर था ना, वो निकाल दिया डेथ का। और ये बुक है स्वामी रामा जी की आंखों से। कोई बहुत बड़ा पर्पस होगा गुरुजी क्यों पढ़वा रहे हैं इस बुक के द्वारा, क्योंकि मैं सोचती हूँ गुरुजी, पता नहीं, गुरुजी तो खैर सबसे ऊपर पिता परमेश्वर है ना, और गुरुजी किसी वजह से ही जितने भी स्वामी जी उन मास्टर से मिले हैं, जितने भी, उनके थ्रू हमें गुरुजी ब्लेसिंग्स दिलवा रहे हैं। क्योंकि जो भी हैं वो लोग हमसे तो बहुत ही ऊपर है ना, जो भी इधर के इतने मास्टर्स हैं। और गुरुजी ने ये भी बताना चाहे, देखो कोई कितना तपस्या कर रहा है, कोई रिद्धि सिद्धि वास्ते कर रहा है, मैं तो तानू इदा दा कुछ क्या ही नहीं रहा करन वास्ते। बट यस, कई चीजें हमें अब्सॉर्ब करनी है, कई सिर्फ पढ़नी है, बिकॉज हम सारी चीजें कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे। और गुरुजी ने तो जैसे हमारा रास्ता बहुत सिंपल बना दिया है, बहुत ही सिंपल बना दिया है। बाकी the ultimate source, the ultimate thing which dwells in the universe, you know, and which is universal, that is love. प्यार से ऊपर कुछ भी नहीं है। चाहे अब देखो हर एक के मेथड है, मेडिटेशन के भी अलग है। जैसे मैंने अगर अपना पर्सनल बताऊं तो मैं यही कहती हूँ, मेरे लिए मेडिटेशन का मतलब आंखें बंद करके गुरुजी के ग्रैटिट्यूड में बैठना। Then I am not bothered about my chakras, I'm not bothered about if my spinal cord is straight or not straight. It's all about love. फिर आप गुरुजी के लिए चाहे उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते जो प्यार से प्यार में उनको याद करते हैं, that's the wakeful meditation. So thank you गुरुजी for this reading. और एक संगत जी कल हम थोड़ा विराम देंगे, संडे है। आप भी अपना अपना संडे, वैसे तो गुरुजी हमें रोज एंजॉय कराते हैं, कल थोड़ा हम विराम देंगे और सोमवार को हम मिलेंगे। कल पूर्णमासी है, कल डिफेंस कॉलोनी में भी प्रसाद बटेगा, और स्पिरिचुअल प्रसाद सबको मिले, जो ना भी आ पाए उनको भी मिले। और कल बद्दी मंदिर में भी उनका एनुअल सत्संग है, तो सबको बहुत बहुत उसकी भी हार्ट फेल्ट विशेस सब संगत परिवार की ओर से। तो हम सोमवार को मिलेंगे। कल पूर्णमासी की आप सबको बहुत 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 बधाई हो, क्योंकि जलंधर मंदिर में भी प्रसाद मिलेगा। सो थैंक यू गुरुजी। वैसे गुरुजी का प्रसाद हमें इस बुक के फॉर्म में एवरी डे ही इज शावरिंग ऑन अस। थैंक यू गुरुजी फॉर दिस ब्यूटीफुल रीडिंग। थैंक यू संगत जी, एकता जी, शिल्पी जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, स्वामी रामा जी और सब हिमालयन मास्टर्स का। थैंक यू। Thank you, Auntie. Thank you so much. And like Auntie said, Chandraji, tomorrow we will not be having a reading, so we will see you on Monday evening. Jai Guruji, Shukrana Guruji.